नमस्ते। आज एक बड़ा खुलासा हिंडनबर्ग का, जिसको कहते हैं ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्या बोला जाएगा, बट इट इज अ सीरीज विच इज कमिंग। और हर बार उसमें मतलब बहुत ब्लेटेंटली किस तरह से सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है, हिंडनबर्ग के जो जिनको फायदा हुआ है इससे। मेरे साथ इस समय देश के सबसे प्रतिष्ठित और हिंडनबर्ग के बारे में मेरे लिए दो लोग हैं जिनको आई विल से कि दे आर द लास्ट वर्ड एज फार एज आई एम कंसर्न। उसमें गोहा परंजय ठाकुर साहब और रवि नायर साहब। रवि नायर साहब, आज पवन खेड़ा जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ओपिनियन नहीं दे रहे थे, वो फैक्ट्स दे रहे थे। एंड जो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ओपिनियन ये हो सकता है कि भाई कांग्रेस उनका फायदा करती है, बीजेपी उनके पीछे है, ये सब ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन ही टॉक्ड ऑफ फैक्ट्स टुडे। फैक्ट्स बहुत रिवीलिंग है। मैं पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो, क्योंकि मैं पवन खेड़ा जी की पूरी बातें नहीं कर रहा, मैं पहले आपसे समझना चाहूंगा कि ये पूरा मामला क्या है, और उसके बाद मेरे कुछ प्रश्न हैं, फिर मैं आप उससे उस पर पूछूंगा व्हाट दिस द होल थिंग इज। I watched the press conference today, and the allegations are, as of now, मैं यही बोलना चाहूँगा allegations, because हमारे पास कोई evidence तो है नहीं, right? Allegations ये था that SEBI का whole time member बनने के बाद भी the current chairman, Mrs. Madhabi Puri Buch, ICICI बैंक से salary लेते रहा. That was the main allegation. And she also got ESOP benefits and keep getting it from the bank. And in the last financial year also she got. And she was getting salary from ICICI Prudential also. That was the basics of what Mr. Khera said today. Now, इसमें interesting thing ये है that Mrs. Buch resigned from ICICI Bank way back in March 2009. She was with ICICI Bank. She was the executive director of corporate banking and consumer banking of ICICI Bank, and she resigned from the bank in 2009, March 2009. She moved on to ICICI Securities. She was the executive director of ICICI Securities from April 2009 to May 2011. And she resigned from ICICI Securities in 2011, citing personal reasons. And she moved to Singapore. Her husband was posted there. And she moved to Singapore in 2011. Now, the question is, why did ICICI Bank, if true, if what Mr. Khera said is true, and if they have evidence, why did ICICI Bank kept paying Mrs. Buch even 11 years after she resigned from the bank? Mr. Khera said that ICICI Bank 2020-21 तक उनको salary देते रहा. 24. No, that is ICICI Prudential. We are speaking about the bank. Yes. She became the SEBI chief in March 22. So उसके बाद नहीं आया, तब तक तो आ चुका है, right? So ICICI Bank, she resigned in 2009. So for 12-13 years, ICICI Bank क्यों salary देते रहा? Now, she was not a part of ICICI Prudential. She was a part of ICICI Bank and ICICI Securities. Then why she was getting money from ICICI Prudential? This is actually the height of conflict of interest, and it was never disclosed. इसमें दूसरा issue है that ICICI is a listed company. It's a bank. It's one of the largest banks in India, and it's a listed company also. Now, in companies, if the employees are at senior level, and if they are withdrawing a certain amount of salary, a salary which is beyond a certain threshold, so उनका नाम और वो कितना सैलरी लेते हैं, उनका इंस्टीट्यूशन उनको कितना सैलरी देते हैं एनुअली, वो एनुअल रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज होना चाहिए. आईसीआईसीआई का एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं है. सो मिस्टर खेरा ने बोला that Mrs. Buch was getting salary
from 2017-18, उससे पहले उनको मिल रहे थे. Whether bank was paying her even before that also, we don't know. If she was not getting, why the bank was paying her from 2017-18 onwards, when she became the whole-time member of SEBI. Now, other issue is ICICI Bank had a lot of issues with SEBI. Lot of cases were there on arbitrations, were there on so what was the role of Mrs. Buch in those cases? So some of them were settled, some of them were just went off the radar. If Mr. Pawan Khera said what Mr. Pawan Khera said was true, or uske saath, if the ICICI, I mean, if that has any connection with SEBI's actions on ICICI Bank, so that is a very serious matter. That's very serious in the sense that it affects the credibility of the regulator, right? Now, हमारा government बोलते रहता है that we are the largest, we are going to be the largest capital market in the world. Already we are there at number 3 and all those stuff. So why the government is reluctant to investigate, put an investigation into it? Who appoints SEBI? See, SEBI is a quasi-judicial body, right? It's a SEBI, India का capital market का regulator है. It's an autonomous institution, a quasi-judicial body. At the same time, it is responsible to the Ministry of Finance. SEBI का board of members or whole-time director or whole-time members or directors or chairman को a committee decided by the central government appoint करता है. A central government appointment committee is headed by the Prime Minister of India. Right now, it is Mr. Narendra Modi. I mean, even that time also, in 2017 also, it was Mr. Narendra Modi. The other member is Mr. Amit Shah. When such serious allegations arise, one of the primary thing, the basic thing the government should do is the government should be ready to order an independent investigation. When Hindenburg raised allegations a couple of weeks ago, saying that Mrs. Buch and Mr. Buch, her husband, had used opaque offshore funds used by Mr. Vinod Adani to park money through his associates in Adani's own companies in India, and that was under investigation by SEBI. And as a whole-time member, when this investigation was started, she was spearheading the investigation. So, how much we can trust SEBI now? That is the question. This is the height of conflict of interest. Actually, if Mrs. Buch should actually resign herself, I mean, she should offer to resign. She should not offer to. She should put a resignation letter right away. If this is true, otherwise she should prove. अभी बीच में क्या हुआ जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट लास्ट टाइम आया था couple of weeks ago, मिसेस बुच और मिस्टर बुच ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट इनका जितना भी इन्वेस्टमेंट्स है जो फंड्स में हो, सिक्योरिटीज में हो या डेरिवेटिव्स में हो, जो भी है फॉरेन में है या इंडिया में, वो सारा डिस्क्लोज कर चुका है सेबी को. 2 दिन पहले स्क्रॉल में एक आर्टिकल आया था, एक सेबी का होल टाइम मेंबर, एक सेबी का मेंबर बताया था जब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तब उनको पता चला ऐसा है, कोई डिस्क्लोजर उन्होंने अभी तक देखा नहीं है. So, सवाल ये उठता है दैट ये लोग क्या छुपाना चाहता है, क्यों छुपाना चाहता है, और सरकार उस पर क्यों चुप बैठा है. रवि साहब, लेकिन मैं इसको थोड़ा आगे ले चल रहा हूं इसलिए कि पवन खेड़ा ने बहुत स्पेसिफिक किया. वो उन्होंने उसका एक एग्जांपल चेस बोर्ड का देने लगे और फिर कहे कि समवन एल्स इज प्लेइंग चेस, और उन्होंने कहा कि वो क्वीन जो है या जो घोड़ा है या जो प्यादे हैं ये अपने मन से नहीं चल सकते हैं. द मैन हु इज प्लेइंग ही डिसाइड्स कि कौन कहां जाएगा, कौन क्या करेगा, कौन मूव होगा. तो उनका इशारा साफ है कि वो किसकी तरफ कह रहे हैं. लेकिन मेरा फिर से मैं वापस एक जगह पे आपसे आ रहा हूं. एक पवन खेड़ा फैक्ट्स बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये से ये डेट, ये से ये डेट एंड दीज फिगर्स, इतना इतना इतना, वो आने पैसे तक का हिसाब दे रहे हैं. तो नंबर 1, पहली चीज तो ये है कि इस पे वन कैन नॉट जस्ट सिट साइलेंट ऑन दिस.
It is something, it amounts to a murder case जहां पे आपने ammunition, weapon, everyone is against you. ये आपको मिल गया कि इससे मारा गया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये ऐसे ऐसे, अब आप उस पर नहीं जा रहे हैं, वो एक अलग बात है. दूसरा ये है कि अगर ये गलत एलिगेशन है तो फिर पवन खेड़ा के ऊपर एक कोई बड़ा केस होना चाहिए, एंड पवन खेड़ा शुड बी ट्राइड कि आपने ये एक सेबी चेयरमैन को करके आपने इस देश को गड़बड़ करने का किया. तो ईदर वे देयर हैज टू बी अ केस, ईदर फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड. मैं इस बात को, you're absolutely correct. So if Pawan Kher, I am saying allegation because I haven't seen the papers. If Pawan has it, then of course he must be having proof. Otherwise, it is the responsibility of the other side to say that, I mean, to come up with some clarification. Then Mr. Kheda should say that, okay, these are the information what we have, these are the evidence what we have, and he should put forth in the public domain, right? So what he said, 2017-18 mein, she got a salary of around 20.6 million rupees. That is 2 crore 6 lakh rupees from ICICI Bank, right? Yes. Now, from ICICI Prudential, Mrs. Buch got 7 lakh 7 हजार, और सैलरी सेबी से मिला था 35 लाख 26 हजार, 521 रुपए, right? For next year, he said that from ICICI Bank, 47.12 million, 4 crore 71 लाख रुपए, and ICICI Prudential से 2 लाख 17 हजार रुपए, then SEBI से 41.25 lakh rupees, 41.25 lakh rupees. Now 1920, they're saying that ICICI Bank से जो मिला, that is 1 crore 51 लाख रुपए, प्रूडेंशियल से मिला था 2 लाख 17 हजार रुपए, और सेबी से मिला था 43.89 lakhs. Now 2021, they are saying that salary from ICICI Bank. It's not my words, it's their words. I'm just quoting them. Yes. Salary from ICICI Bank is 46.43 million rupees. That is 4 crore 60 lakh. 64 lakh. Wow. So yeah, I mean 2 lakh 17 हजार from ICICI Prudential. 2 lakh 17 हजार ICICI Prudential say, that is, it's going even. वो ज्यादा नहीं है, और सेबी से मिला था 40 लाख 7 हजार, राइट? नाउ 21-22 सैलरी बंद हो गया ICICI का. इधर तो ESOP आता है, दैट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज फ्रॉम ICICI बैंक. उसमें मिला है इनको 26.62 मिलियन, दैट इज 2.66 करोड़. इसका जो TDS है, दैट इज ऑल्सो पेड बाय द बैंक, करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए. इसका जो TDS है ESOP का, वो भी बैंक ने पे किया है. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. एंड ICICI Prudential से जो सैलरी आया है, दैट अगेन 2 लाख 17 हजार, एंड सेबी से आया है 33 लाख 85 हजार. नाउ 22-23 she has become the chairman of SEBI, right? ESOP is 17 lakh 89,000. इसका जो TDS है 6 लाख 37 हजार रुपए, वो भी ICICI ने दिया है, ICICI बैंक ने दिया है. करेक्ट जी. और प्रूडेंशियल ने जो दिया है 4 लाख 44 हजार रुपए, और सेबी से इस बार सैलरी मिला है, बिकॉज शी हैज बिकम द चेयरमैन, सो द सैलरी हैज गॉन अप. इट इज 78.38 लाख, 78.38 लाख. लास्ट ईयर 23-24 सेबी से मिला है 57.54 लाख रुपीस सैलरी, एंड ICICI Prudential से अगेन 2 लाख 17 हजार रुपए. So now this actually raises serious concerns. I mean, if they are saying it's salary, in Pawan's press conference it was very clear this was salary. So why should the bank pay the salary? She resigned, and in the case of ESOP, okay, she is free to up to a certain time the employees are free to sell their holdings in the bank, right? Their holdings in the company under the ESOP, employee stock option.
why did she start to utilize it only or sell it only after or encash it only after she became the chairperson of SEBI? So now this raises another question. So is it ESOP or the bank is again paying her salary or something related to that? And are they mentioning at ESOP? Correct. And if it is ESOP, okay, if I am working with a company and I am opting for the stock option, and tomorrow if I am encashing it, why should my employer pay my tax? My tax. So in this case, ICICI, I mean, as per Pawan, what they said, ICICI was paying this, paying the tax liability. Yes. So दाल में कुछ काला है, of course. जी नहीं रवि साहब, मैं एक चीज और, क्योंकि ये जो पिछली बार इफ यू रिमेम्बर और जो पहला हिंडनबर्ग की जो अभी रिपोर्ट आई थी जिसमें माधवी बुच का नाम आया था, रिपोर्ट आने के बाद माधवी बुच और उनके हस्बैंड की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि वी विल कम आउट विथ अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ये उनका पहला आता है, लेकिन उसके बाद उनके यहां के बजाय सेबी की तरफ से, जो मैंने देखा, आपको ज्यादा पता होगा, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, सेबी की तरफ से उनका हस्बैंड एंड वाइफ का एक आया था डिटेल। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं उससे, हाँ, लेकिन सेबी की तरफ से भी एक आता है और सेबी ये कहती है कि उन्होंने सारे डिक्लेरेशन किए। तो सेबी तो वही कह सकती है जो माधवी बुच जी ने उनको डिक्लेयर किया है, सेबी वही कहेगी कि ये डिक्लेरेशन है। नाउ क्या ये डिक्लेरेशन माधवी बुच जी की तरफ से आया था कि मैंने अपने सारे जो जिसको हिंडनबर्ग कह रहा था वो ऑलरेडी सेबी में डिक्लेयर किया था, ये कभी कहीं मिला आपको पढ़ने को? नहीं, उन्होंने बोला दैट शी डिक्लेयर्ड एवरीथिंग, एंड सेबी का स्टेटमेंट में भी ये बताया गया था दैट उन्होंने सारा डिक्लेयर कर चुका है, जहां जहां डिक्लेयर करना है। उनको डिक्लेरेशन करना चाहिए टू द गवर्नमेंट एंड टू सेबी। नाउ इसमें दूसरा एक इश्यू है दैट इसलिए बताया था पहले, जो एक आर्टिकल आया था 2 दिन पहले स्क्रोल में, उसमें सेबी का एक करंट होल टाइम मेंबर जो अनोनिमस रहना चाहते हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, जी उन्होंने डिस्क्लोज किया दैट जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया तब हमें पता चला दैट इनका ऐसे एसेट्स है और इनका ऐसे इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया था ये। यस एक हुआ है। यस नहीं, मैं एक चीज और कहूंगा कि बार बार एक, देखिए, 2 चीजें हैं जिसपे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। एक मिनट, उससे पहले 1 मिनट। सो अभी जो सेबी का जो लेटर आया था, उसने उस लेटर में सेबी ने एक्चुअली दे ट्राई टू सेव मिसेस बुच, यस राइट, लेकिन सेबी का ही एक मेंबर बोल रहा था ऐसे कोई डिक्लेरेशन हुआ नहीं, एटलीस्ट ही हैजंट सीन एंड इट्स नॉट देयर इन हिज इंफॉर्मेशन एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, इट शुड बी अंडर हिज नोटिस एंड ही शुड बी नोइंग इट। So that means SEBI is also trying to protect Mrs. Buch. Now the question has become more serious. Why? If someone has been alleged of criminality or of illegality in a regulatory system, then why should the organization or the regulator itself trying to protect that individual? Is that individual bigger than the regulator itself? And if so, why? So these are the important questions and nobody is answering it. नहीं रवि साहब, मैं उसी लेटर का, क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग बाय माय मेमोरी, मैंने अभी लेटर, उस समय मैंने लेटर निकाल के पढ़ा था। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लें जो मेरे दर्शकों के मन में भी होगा। उस लेटर से एक चीज और, लेकिन उन्होंने कहा इन्होंने सब कुछ कर दिया है, लेकिन एक चीज आम लोगों को पता लगी कि इनको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट पे स्टेटस रिपोर्ट दी है और उस स्टेटस रिपोर्ट को इस तरह से बताया जा रहा है कि वो सब कुछ सेबी इज कंसर्न, अडानी के वो जो 22 हैं वो चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, और उस पे अभी क्या हुआ है ये सेबी ने कहा है कि ये क्योंकि सब जुडिस है इसलिए अभी हम इस पे कुछ वो नहीं करेंगे, जब होगा तब हम इसको अपनी साइट पे डालेंगे। तो दैट मींस दैट दोस इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन। मैं एक आपसे समझ लूं ये बात। लास्ट टाइम आपने जब इनवाइट किया था आपके प्रोग्राम में, तब भी हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। जो अडानी का पीआर एजेंसीज एंड ऑलमोस्ट ऑल द गौदी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड द राइट विंग आईटी सेल, they just go into the market and beats the drum
saying that Adani Group got a clean chit from Supreme Court of India and from SEBI. I'm sorry for using this word. This is utterly nonsense. For the reason that, first of all, Supreme Court only said, Supreme Court ने clean chit नहीं दिया, Supreme Court ने बोला था SEBI investigate कर रहा है, उनको करने दो. Because as a regulatory body, SEBI के ऊपर एक suspicion आ गया तो that will affect the capital market of India and India's reputation internationally. Probably, I assume, probably ये reason होगा Supreme Court ने इसे एक निर्णय लिया. Now let us come to SEBI's investigation. The last report, SEBI ने जो status report बताया था उसने बोला था that 24 investigation चल रहा था. उस टाइम 22 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है, 2 चल रहा था. अभी इस मार्च में उन्होंने 23वां भी कंप्लीट कर लिया. अभी द लास्ट वन इज स्टिल गोइंग ऑन. नाउ सेबी का प्रोसेस ऐसा है दैट इफ एन इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड एंड इफ दे फाइंड समथिंग इज नॉट करेक्ट और सस्पिशियस और इलीगल और एनी एनोमली, सेबी शॉकॉस नोटिस भेजता है. सो अडानी ग्रुप में 7 कंपनीज को सेबी ने शॉकॉस नोटिस दिया है और उसमें एक और 2 कंपनी को 2 शॉकॉस नोटिस गया है. ये सेबी ने नहीं बताया. अडानी ग्रुप का जो लास्ट क्वार्टरली फाइलिंग था, उन्होंने उसमें खुद मेंशन किया है दैट सेबी का शॉकॉस नोटिस आया होगा. आई मीन हर एक अलग अलग कंपनी का, अडानी एंटरप्राइजेस, Adani Ports and Special Economic Zone, Adani Power Limited, Adani Wilmar. So, I mean, all these companies, Adani Green Energy Limited. So, Adani Transmission, आजकल उसका नाम और कुछ है. So, in all these companies, Adani New Energy Limited. Yeah. So, all these companies को already शॉकॉस नोटिस सेबी ने दिया है. इन्होंने अपना उसमें भी बताया है that this शॉकॉस notices is not it's not serious. अडानी ने बताया है. So due to this कोई material fluctuation or whatever the word they used नहीं होगा. That means कंपनी को कोई financial losses नहीं होने वाला है. That is what I mentioned. और serious consequences कंपनी के लिए होगा नहीं. That is their confidence. So what is SEBI's finding? SEBI did not disclose. So if anybody says that Adani got a clean chit, that is incorrect, completely incorrect, and that's a lie which is spread deliberately to create a smoke screen on what is going on. जी रवि साहब, मैं चलते लास्ट एक इसलिए पूछ ले रहा हूं कि इट इज व्हाट हैज हैपेंड. शेयर मार्केट में ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए कुछ नहीं था, इसलिए शेयर मार्केट तो इज बूमिंग और वो तो बहुत अच्छा कर रही है. देयर इज नथिंग ऑन दिस. But let us assume whatever we with at least with my experience कि सरकार का एक बड़ा रोल है इस शेयर मार्केट को हैंडल करने. लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि इंडिया एज एन इंटरनेशनली जब उसकी रैंकिंग होती है, उसके बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, तो वहां पे जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है उसी के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह है तो इंटरनेशनली हमारी रेटिंग पे इस पे नहीं फर्क पड़ता है. इट इज समथिंग व्हिच इज द नेशन इज गोइंग टू गिव द प्राइस. वो वी आर गोइंग टू पे दिस प्राइस. आपको नहीं लगता है कि इट विल अफेक्ट दैट? ऑफ कोर्स it will affect the investors. It will affect the country also. I mean, all of us have watched or whoever is watching the financial market, who I mean, I've watched how the fluctuation happens, but whatever is happening in Indian stock market right now is really, to me at least, it's very surreal. In the sense, why I'm saying this, एक दिल्ली बेस्ड कंपनी, उसका 2 बाइक का शोरूम्स है. यमहा का 2 शोरूम है उनका. उन्होंने एक आईपीओ फाइल किया था 12 करोड़ रुपए रेज करने के लिए, एंड इट वाज सब्सक्राइब्ड एंड विथ 4,000 करोड़ रुपीस. बाइक का शोरूम है, 2 शोरूम है, 12 करोड़ रुपए रेज करने के लिए आईपीओ फाइल किया था, and it raised 4,000 crore rupees. What was the subscription? Not raised, I mean, it was subscribed up to 4,000 crore rupees. मजाक है ये. So there is something is not right. Something is wrong. I mean, severely wrong. And nobody is addressing it. Nobody is raising a finger. जी
जी, मैं रवि साहब, क्योंकि मैं आप दर्शक को नहीं पता रहता है, हम भी जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तो हमारे भी रैंकिंग, हमारे भी क्रेडिट वर्दीनेस देख के इंटरेस्ट भी कम ज्यादा होता है। तो इंडिया का जो हमारे लोन है उस पर भी फर्क पड़ता है, हमारे बहुत सी चीजों पे फर्क पड़ रहा है। तो इट इज नॉट दैट कि ये सिर्फ इट इज जस्ट अफेक्टिंग समवन, इट इज अफेक्टिंग आवर कंट्री एज अ होल। और इट इज दैट इज व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि सरकार जल्दी जल्दी इस पे कुछ करे, क्योंकि कलेक्टिवली वी ऑल आर सफरर ऑन दिस। थैंक यू सो मच रवि साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस। लेकिन Thank you जैसा so अभी much. लगता है, जी रवि साहब, नहीं अभी लगता है कि वी माइट हैव टू टॉक वेरी मतलब जल्दी ही, बिकॉज आज शाम या कल तक जो जो स्टैंडर्ड एसओपी है, सेबी की तरफ से कुछ आएगा, फिर बीजेपी की तरफ से कुछ आ जाएगा। आई डोंट नो व्हाई बीजेपी विल डिफेंड ऑल दीज थिंग्स कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। That's another interesting thing. I mean, whenever it comes to something on SEBI, I don't know why this who has no knowledge about the finance market or how the capital market works, they just jump in. The IT cell guys just jump in, and they start to जी protect. I mean, जी it's very curious why. I mean, एंड if those in power has nothing to hide, Madhabi Puri Buch is not a political person, right? She was not even a former bureaucrat. She was a banker. She was an ex-banker. So why a political party which is in power? Why the government led by a political party, the biggest political party, the so-called biggest political party in the world, or the richest political party in the world, which is in power in India right now, is trying to protect one individual if they have nothing to hide, or if they have not to protect some vested interests who are associated with them. करेक्ट 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 ऐसा। और मुझे ये लगता है कि एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन, एज कलेक्टिवली, मिनिमम जो मिनिमम है, मतलब सबसे लीनियंट व्यू, सबसे लीनियंटली माधवी बुच जी ने बहुत अच्छा काम किया है सब देखते हुए। मिनिमम इज शी टेंडर हर रेजिग्नेशन, the investigations must go on, and whatever is there, one must pay. Minimum resignation. Minimum is. I would even say she don't have to even resign now. She's about to retire in March next year, so she can go for a long leave and let government appoint someone, okay, and Correct. let government put up an independent investigation, maybe led by a former justice, or maybe a joint parliamentary committee. I mean, it should be the investigation must be closed. I mean, this is not a so bigger thing to investigate for months and months. This can be closed in a month because it's related to an individual and her husband and their conflict of interest and their investments, and that's also the period is of only 6 years. So it's not that they will take so much time. So 1 month, 2 months, let them complete the investigation, put out the report, and if she is clean, let her come back. That should be correct. करेक्ट। नहीं रवि साहब, इट इज ऑल्सो ऑन फैक्ट्स। ये एंट्री आई थी, ये पैसा आया था, ये पैसा आया था, वो आया था या नहीं आया था, या तो आया था या नहीं आया था। नहीं आया था तो पवन खेड़ा जी को मुकदमा चलाइए और उनको फांसी पे लटका दीजिए। एक नया कानून लाइए और कहिए कि अगर इस तरह का किसी ने कहा है तो उसको फांसी पे लटकाए। प्लीज डू इट समथिंग, यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड वेट। I am someone who don't support capital punishment. So, okay. so I won't say. Now, no, I would say this. It's very easy to find out. Like, I mean, if the committee can ask her to submit her ITRs, income tax returns, and the computation of income. As simple as that. As simple as that. Yes. Yeah. Yes. Thank you so much, Ravi Saab, for joining. और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you very much.